have their rights there, this thing over here. First of all, they try and look as well as possible. They don't want to stand up. But they're watching people, they're trained to watch body language. And they make a sort of a ring of Good to see you. Yes. With our dogs also. From individuality. I have some strong views. I think the law has to change. working together with critical care specialists, palliative care. They give someone संभालो ना तुम्हारा काम है मेरा इनको कैमरे वालों का डिस्टेंस मैं डॉक्टर अंबिका राजवंशी जो कि CanSupport की CEO हैं, उनसे निवेदन करूंगी कि वे हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री हामिद अंसारी जी का औपचारिक रूप से स्वागत करें। I now invite Mrs Harmala Gupta, Founder President CanSupport, to please present the welcome address. Vice President Shri Hamid Ansari ji, Mr. Manmohan Malhotra, Mr. Sunil Nehru, Dr. Ambika Rajvanshi, all the members of CanSupport, volunteers, staff, dear patients, families, and well-wishers, supporters, donors, thank you so much for being here this morning to celebrate this very special occasion. It's difficult to believe that 20 years have gone by. And looking back, I can say it's been quite an adventure. When we started out, we were not sure exactly what was facing us. We were pioneering palliative care in North India, and we were starting with a home-based program, which meant that we would go into the homes of patients who needed our support and interact with them, their families, and ensure that they remained comfortable till the end of life, maintain their dignity. But you know, each family is different. We were now going into corners of Delhi we had never seen before. We were going to slum areas, spread out all over the city, and to low housing areas. Because you can live in the city and live a very isolated life and never really know your neighbors beyond your immediate vicinity. And this was an opportunity, and that's why I call it an adventure and a great learning, because here was an opportunity to see people who did not have many of the privileges we take for granted, who besides cancer
was struggling with so much more in their lives. There was, of course, poverty, but there were family problems often that overshadowed the cancer. There were people who were depressed and whose depression was not being attended to. There were patients who were at the end of their tether, and when we walked in said, only enter if you have an injection to take my life. Otherwise, don't come in. So, you know, it was a dire situation. And yet, we realized that there was so much that could be done, despite this. And what we needed was a collective effort. We needed to skill ourselves. We needed a team where you would have a doctor who knew how to do good pain control, who knew how to take care of other troubling symptoms so that this person was comfortable. You needed a nurse to help the family members cope with the nursing requirements that were required, to teach them, to empower them so that they would be more effective in what they do. And I think perhaps most importantly, you needed a counselor. Now these were people who had been told, you know, that they had a life-threatening disease, but not really the ramifications of that disease. And often when we would visit these families too, we would be told, don't tell. And this was unfortunate because after spending 2 or 2.5 years going to a cancer institute, most people know that they have this disease. And yet no one really wants to talk about it. And so the counselor on the team, so important, to help these families at that moment to understand the need for information, besides the need for information, but to also speak openly, to reflect on a life now that was going to end, and to give that person an opportunity to say the things they wanted to say and do the things they wanted to do. And so that they could leave with a sense of completion, that their life was now at an end and that it had ended in a good way. So this was really the mission, one which we tried to fulfill in the best way we could. We started out with just one team. Today we have almost 26, 27 teams. We started out with 6 patients. Today we have close to 2,000 patients spread all over Delhi and the National Capital Region. So we have come a long way. There's much more that needs to be done. And I'm sure that given the good start we've had and the wonderful support we've had, that this mission will continue to grow, will continue to support people, because sadly, there is such a need out there. I mean, I can quote the statistics to you. 40 million people in the world who will need palliative care. At least half of that number, 20 million, who will need end-of-life support of some kind or the other. And unfortunately, dying is becoming more and more difficult. Sadly, you know, people now find themselves often strapped to machines, being kept alive artificially, separated from their loved ones. It's terrible. And I think there's such a need now for each one of us to think about these things. I know death is the bitter truth and we don't want to dwell on it. We'd rather think about life, and sure, we should. But life, it should be life that has meaning. And I think our attempt at CanSupport, and this is the whole palliative care movement that we represent, is basically to help people find that meaning. Because each one of us has to do it in our own way. We are unique, we have different needs, and I think the greatest skill is really not just the fact that you're a doctor, a nurse, or a counselor, and I see this in our teams, to go out there with an open mind, judging no one, ready to listen, allow people to tell their sacred stories, be with them, because finally that's what people want. Everyone
knows their reality and they find their own way. But sometimes they just need to believe in themselves. And it's helping people find that self-belief again. यहाँ आज हमारे काफ़ी पेशेंट्स आए हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स आए हैं और हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आपकी वजह से ये काम चल रहा है और आपने अपने घरों को हमारे लिए खोला है। हम आपके घर आते हैं, आप हमको इतना सहयोग देते हैं, इतना प्यार देते हैं और हाथ हाथ मिलाकर ये काम आगे बढ़ रहा है। तो आपका बहुत धन्यवाद इन 20 सालों में। So finally, I'll just say this is just the beginning. 20 years seem to have gone in a flash. There were so many people who have played a role in this. You know, often I get all the kudos. She's the founder, you know. I may be the one who was the most persistent in the beginning, perhaps. But you know, I myself have found my ability to continue, my inspiration from others. Because it's everyone's inspiration that keeps the other one going, really. And without that, we wouldn't have been able to build CanSupport to this level of being a really caring and compassionate organization. And so I thank all of you for being part of that journey and for being here this morning for us to celebrate it. Thank you. Thank you, Harmala ji, for your very inspiring and moving welcome address. We are now going to show you a film. We have tried to capture CanSupport's work with cancer patients and their families in a short film. This film will provide you a glimpse about what we do. पहले तो घबरा ही गई। 3-4 महीने पहले पता पड़ा था कि ये प्रॉब्लम है उन्हें। 2 साल हो गया। मेरे को धीरे होता था, मैं गोली खा डर जाता था। 6 मार्च को मुझे पता लगा था कि मुझे कैंसर है। ऐसा लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं रहेगा। पैलिएटिव केयर का मतलब है हमें पेशेंट एंड फैमिलीज को कंफर्ट देना और उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उनको इम्प्रूव करना। पैलिएटिव केयर इज नॉट ट्रीटमेंट। जितना भी दिन है उनको उस दिन को उनको कंफर्ट देना, ये है। फर्स्ट स्टेज पे बहुत ही कम जो है पेशेंट्स हमें मिलते हैं। कोई पेशेंट मिला हमें जो डायग्नोज हुआ है उनको, फिर हम उनको ट्रीटमेंट के लिए काउंसलिंग करते हैं कि आप ट्रीटमेंट कराइए। फर्स्ट स्टेज पे हैं, अभी आप क्योर हो सकते हैं, आपकी बीमारी क्योर हो जाएगी जब आप अगर अच्छे से आप अपना ट्रीटमेंट ले लेंगे। मेरे हस्बैंड के पास ही एक वो थे जो उनके पास नंबर था, उन्होंने दे दिया कि बोले बहुत अच्छे हैं, बोले टेबलेट वगैरह सब फ्री में देते हैं। एक फैमिली की तरह ही उन्होंने मेरे सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे से दूसरे तीसरे दिन ही ऑपरेशन के आके उन्होंने मेरे को पूरा बताया कि तुमने ऐसे सोना है, ऐसे उठना है। इवन छोटी से छोटी बात को भी उन्होंने मुझे समझाया और इतना अच्छे से समझाते थे कि मुझे कोई ऐसा लगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं है। मेरे हस्बैंड के अभी जस्ट 8 सितंबर को डेथ हुई है। कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो हस्बैंड है वो तो हस्बैंड ही। हस्बैंड बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे।
हर तरीके से पेशेंट हमें मिल जाती है। गिरी पेशेंट के लिए जैसे जो स्पेशली मैं जुबियों में देखी है, वो किसी को अपना कहने के लिए तकलीफ है, कहने के लिए कोई नहीं और उनका सुनने के लिए कोई नहीं होती है। बहुत मुश्किल है आप किसी को अगर बोलते हो कि आप जो उसके प्रियजन हैं कि वो जाने वाले हैं या ज़्यादा समय नहीं है उनके लिए, पर वो सच्चाई उसको बताना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, केयर गिवर्स के भी ऐसे होते हैं जो फैमिली में वो शेयर नहीं कर पाती है, तो वो हमसे शेयर कर सकती है। उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। पूछते थे कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर मैं अपनी जो भी घर की समस्या वो एकदम ऐसे सुनते थे जैसे मेरी बड़ी सिस्टर हो, बड़ी बहन है, छोटी बहन हो, इस तरीके से वो लोग सुनते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं इन लोगों से थोड़ी सी घुल मिल गई। मुझे इनका नेचर स्वभाव अच्छा लगा। वो जो बात है ये नहीं देखते वो मरीज है, हो सकता है मेरा भाई है, मेरा बेटा है, वैसे बात करता मेरे को कैंसपोर्ट ने इतना सपोर्ट किया कि मैं हॉस्पिटल कीमोग्राफी के लिए जाती थी, तो जो भी मेरे पेशेंट और भी पेशेंट है डे केयर में, तो उनको टेलीफोन नंबर दे के आते थे कि इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लें। मुझे उम्मीद है जिस तरीके से मैं बताती थी तो कई लोगों ने कांटेक्ट किया भी होगा। कोई दर्द होता है बस, पहले सर हुआ, फिर इधर हुआ, फिर बीच में आ गया 1 घंटे में। मैं बहुत परेशान हुआ, मैं इतना रो पे पड़ता था, इतना दर्द कभी नहीं सहा था। पेन से तड़पते पेशेंट, पेन से वो ना खाना पी पा रहे, ना बात कर पा रहे, इस तरह पेशेंट। हमारी विजिट होती है तो हम वहाँ बैठ जाती है, पेशेंट से पूरी डिटेल्स ही पूछते हैं, आप क्या मेडिसिन लेती है, क्या कब लिया है। कुछ लोग ऐसे लोग हैं अनएजुकेटेड होती है, बोलते हमें ये छोटा गोली मिली है, फिर हम उसको समझाते हैं छोटा गोली आपके लिए रामबाण है, आप लेके तो देखो। फिर हम उसकी बात बैठ के देख के आधा घंटा वेट करिए, फिर बोलते हाँ सिस्टर ये तो पेन बता ही रहे। तो इस तरफ का मेंटालिटी को चेंज करती है। आगे मैंने दवाई सोची, उससे मेरे को बहुत आराम है। 1 महीना बिल्कुल ठीक, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। कैंसर जैसी बीमारी तो कभी भी किसी को भी हो सकती है। हिम्मत से इस बीमारी से लड़े, बाहर आने के पूरे चांसेस हैं। अभी तो 5 इयर्स तो मुझे मेडिसिन लेना है। मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट्स हैं जो टाइम टू टाइम आके प्रॉब्लम करते भी हैं, और डॉक्टर ने बोला है कि करेंगे भी, तो उसके लिए भी हमें कैंसपोर्ट की जरूरत है। ये काम सब लोग नहीं कर पा रहे, बट ये जहाँ पे भी ये काम पहुँचती है प्योर काम हो रहा है, ना कोई इधर ना उधर। जितने मरीजों को जरूरी होते हैं सारे हम करके आते हैं। जहाँ भी हम पहुँचते हैं हम वहीं बोलते हैं हमें ये टीम सपोर्ट करती है या ये कंपनी सपोर्ट करती है। तो उस तरह हम जब जितना पेशेंट हमें दुआ देते हैं उतनी दुआ आपको भी मिल जाती है। जो गरीब हो, जो दवाई गोली वगैरह नहीं लेते होंगे, आप लोगों करते हैं, उनके लिए मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि चलो उन लोगों को ये चीजें तो उनको हो रही है, क्योंकि इस चीज का एक तो पता है कि ये सही नहीं लगी, लेकिन आप वो चीज कर रहे हो जो कि कोई नहीं कर सकता है ना। मुझे बहुत, मैं क्या बोलूं। CanSupport has proven its need, and the need is a growing one. More and more of us are going to find ourselves in a situation where we need good pain control, where we need people to come and assist us and our families. So I would really appeal to everyone, let's understand and move forward together and support this work, because we have nothing to lose, only everything to gain.
आशा है हमारी ये छोटी सी फिल्म आपको हमारे कार्यक्रमों की एक झलक दिखाने में कामयाब हुई होगी। हम पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग ट्रस्ट को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने इतनी मेहनत और लगन से ये फिल्म हमारे लिए बनाई। We now request Hon'ble Shri Hamid Ansari ji to release CanSupport's 20-year milestone book as well as a souvenir brought out by CanSupport to commemorate the World Hospice and Palliative Care Day. May I request other members on the dais to accompany the Honorable Chief Guest and Mr. Sunil Nehru to present him with the books to be released. हमारे माननीय अतिथि अब CanSupport की 20 वर्षों का व्याख्यान करती पुस्तक और विश्व प्रशासन